Good morning, everyone. Good morning, sir. ओके, कल हमारा कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। इसलिए आज हम लोग 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 3D ज्योमेट्री इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट। अगर हमें 2D के फॉर्मूलाज याद हैं तो हमें 3D के फॉर्मूलाज इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी अब हम क्या करेंगे इसमें। हाउ टू लर्न दिस वन फॉर्मूलाज एंड ऑल द थिंग्स इन 3D। हम ज़्यादा आज बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जो 3D ट्वेल्थ वाला है वो ट्वेल्थ का सिलेबस जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसमें पढ़ लेंगे। अब इस 3D ज्योमेट्री में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझते हैं। पहले तो हम इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में टोटल 3 एक्सेस है। ओके, देर आर 3 एक्सेस। वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर, इस तरह से 3 लाइन्स आर देयर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी है ना, आप लोग एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ इसको। क्या करें आप समझे। जिस तरह से मैं एक प्लेन सरफेस लेता हूँ, उस प्लेन सरफेस में जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द एग्जाम्पल हियर ओनली। सर, जियोजेब्रा ग्राफ 3D। ठीक है, देखो, अभी आपको शायद एक प्लेन दिख रहा होगा। इस प्लेन के ऊपर एक एक्सिस है और नीचे एक एक्सिस है, करेक्ट। देखो यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस वर्टिकल वाला है। तो हम अगर ऊपर देखें तो ऊपर में टोटल 4 ब्लॉक्स बने और इसके नीचे भी 4 ब्लॉक्स बनेंगे। जिस तरह से ऊपर फ्लो 4 ब्लॉक्स है, ऐसे ही नीचे भी क्या है उसके 4 ब्लॉक्स हैं। आई थिंक यू गेट द आइडिया फॉर द 3D प्लेन। 3D प्लेन के बारे में आइडिया आ गया होगा। यस और नो? यस। हाँ या ना बच्चों लोग? Yes, sir. ठीक है, चलो। अब हम क्या करते हैं, हम इस 3D प्लेन को समझते हैं तो इसमें पॉइंट्स भी रहेंगे, है ना। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर मैं 2D की बात करूँ, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, 2D में हमारे पास एक एक्स एक्सिस था और एक कौन था बोलो, वाई एक्सिस। फिर हम यहाँ बोलते थे प्लस प्लस, प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। फिर हमारा ये साइन कन्वेंशन होता था, करेक्ट ना, साइन कन्वेंशन होता था। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ
अब इस 2D से हम 3D में कैसे जाएंगे वो देखो। अब ये 2D वाला प्लेन तो ये नीचे वाला हो गया ना बच्चों लोग, बराबर। अब इस 2D वाले प्लेन में अगर मैं ऊपर जेड एक्सिस देखूँ तो पूरे प्लस एक बार ऐड हो रहे, और फिर नीचे देखूँ तो नीचे माइनस वाले ऐड हो रहे, ठीक है। इसमें नीचे माइनस वाले ऐड हो रहे जेड एक्सिस। तो हम क्या करते हैं इसको याद रखने के लिए, 3D में हमारे पास, 2D में हमारे पास क्वाड्रेंट थे, करेक्ट ना। 2D में हमारे पास क्वाड्रेंट थे, क्वाड्रेंट। अब 3D में वी हैव ऑक्टेंट। क्या हमारे पास ऑक्टेंट है, ठीक है। तो वो कौन से ऑक्टेंट है और इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेंट लिखता हूँ, ऑक्टेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ऊपर वाले हो गए, पॉजिटिव जेड एक्सिस वाले। और नीचे वाले सिक्स, सेवेंथ, सॉरी 5 आएगा ना पहले, हाँ। 5, 6, 7 और 8, ये हमारे हो गए नीचे वाले, बराबर। अब इनका साइन कन्वेंशन याद कैसे रखना है। हम लोगों को 2D का याद है ना, प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, मैंने एक बार लिखा। फिर एक और बार सेम चीज लिखूंगा मैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, लिख लिया। लास्ट में जेड एक्सिस 4 टाइम्स प्लस ऐड करूंगा और 4 टाइम्स माइनस। तो मैं कोई भी अगर कोऑर्डिनेट दे देता हूं तो मुझे पहचान आना चाहिए कि वो कौन से ऑक्टेंट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे बोला कि 2, 3 और -1, तो कौन सा ऑक्टेंट है, बताओ कौन सा ऑक्टेंट है। 2, 3, -1, यस, 5। फिफ्थ ऑक्टेंट। समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। फिफ्थ ऑक्टेंट है, करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, पॉइंट्स ऑन एक्सिस देखेंगे, पॉइंट्स ऑन एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। वाई एक्सिस का अगर देखो मैं, वाई एक्सिस का तो क्या आएगा बोलो ना, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। और जेड एक्सिस का अगर मैं देखो, जेड एक्सिस का तो क्या आएगा बोलो, जीरो कॉमा जेड। ठीक है, वन मोर थिंग। अब अगर हम देखेंगे पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन, तो कौन से प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल 3 प्लेन है बच्चों लोग। एक है एक्स वाई प्लेन, एक है वाई जेड प्लेन, और एक है एक्स जेड प्लेन, करेक्ट। तो एक्स वाई प्लेन का जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें एक्स और वाई तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन जेड एब्सेंट रहेगा, क्योंकि जेड है ही नहीं ना, एक्स वाई प्लेन में ओनली एक्स एंड वाई। वाई जेड प्लेन में एक्स एब्सेंट रहेगा, वाई एंड जेड रहेंगे। और एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड रहेगा, वाई एब्सेंट रहेगा। तो इनका जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो के फॉर्म में रहेगा। वाई जेड प्लेन में जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड, और एक्स जेड प्लेन में एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड रहेगा। ठीक है, अब हम एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट पी है, से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कहीं तो है स्पेस में, इज देयर एनी पॉइंट पी, ओके। एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी के बारे में अगर मैं बात करूं, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसकी मैं बात करूं, तो फर्स्टली वी टेक डिस्टेंसेस, डिस्टेंस फ्रॉम, लिसन केयरफुली, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन पहला, फिर वाई जेड प्लेन, फिर एक्स जेड प्लेन। अच्छा, you now imagine that when I say distance from the xy plane, it is vertical distance only. And in a vertical, you observe that only z distance is there. Okay, xy plane is the plane that we are able to see. Okay, and z axis is there vertical. When I say xyz is a point in any plane, like that, if I give it 1 comma 2 comma 3,
1 comma 2. Just a moment. So it has something. Okay, done. Then distance from the xy plane is nothing but mod z. It's a vertical distance. YZ plane it is mod x, and xz plane it is a mod y. Okay. Now distance from the x axis, y axis, and z axis. Okay, x axis, y axis, and z axis. Distance from the x-axis, y-axis, and z-axis. Distance from the x-axis is root of y square plus z square. From y-axis it is root of x square plus z square. From z-axis it is root of x square plus y square. And lastly, distance from the origin. Distance from the origin. It is root of x square plus y square plus z square. Now what we should know about equation of x-axis. Equation of x-axis is here y equals to 0 and z equals to 0. Okay. Equation of y-axis is what is the equation of y-axis now? X equals to 0 and z equals to 0. And equation of z-axis is x equals to 0 and y is equals to 0. And equation of xy plane is z equals to 0. YZ plane, YZ plane is x equals to 0, and XZ plane is y equals to 0. These are the basic information for the 3D. Okay. We should know about the octant. There are 8 octants in which sign convention is very important. We follow for the 2D, we write it for 2 times and give the plus, 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 and minus, 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 minus. For that, we'll get the sign convention. Points on axis, we should know. Points in a plane, we know. Distance from the various axes and various planes, we have to know. And the distance from the origin and the equation of these. Now, in a 3D plane, what we are doing? Now we are finding the distance between distance between 2 points. Distance between 2 points. Say A is a point there. A is a point x1, y1, z1, and B is a point x2, y2, z2. Then distance AB. What is the formula for distance AB? Yes, what is the formula? Acha, do you know about the 2D's formula? What is the two dimensional geometry? What is the distance between the x1, y1 and x2, y2? What is the formula for that? Yes, anyone? Anyone? x2 minus x1 square, Uh, and plus y2 minus y2 minus y1 ka whole square. But with square root, na? With square root. So similar formula we are using here. X2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 to the whole square plus extra z coordinate will we have to add it. Okay, plus z2 minus z1 to the whole square. This is the distance formula between 2 points. Okay, this is the distance formula. Okay, now moving forward, if I say if a b and c are collinear, then what will get? Distance AC is equals to distance AB plus distance BC. Okay. Where ABC are collinear, huh? ABC. B is in the middle. Okay. If ABC are collinear, then what we are using? Distance of AC is equals to distance of AB plus distance of BC.
Do you have any doubt in the distance formulas? Yes, any doubt? Okay, let's see. Moving forward, now we are going to learn about the section formulas. Section formulas. In that, the first one is internal division. Internal division. Let P be the point. P be the point. Divide the line segment. Divide the line segment AB in the ratio ms to n. That is, देखो इस तरह से डायग्राम है. That is, it has a diagram like that. There are 2 points, say A and B, with A's coordinates are x1, y1, z1, and B has the coordinates x2, y2, z2. And there is any point P which divides this line segment ms to n, where P has the coordinates x comma y comma z. Okay, P has a internal division. P has an internal division. Then to find the coordinates of P, we have the basic formula for that. X is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. Y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n. And z is equals to mz2 plus nz1 upon m plus n. From this formula, I will get the midpoint formula. Midpoint formula. In midpoint formula, what we have, ms to n is equals to 1 upon 1. That is, ms to n is equals to 1 upon 1. So value of m and n are 1. Value of m and n are 1 now. Okay. Therefore, the value of x should be x1 plus x2 upon 2, y should be y1 plus y2 upon 2, and z should be z1 plus z2 upon 2. Okay, this is the formula for midpoint formula. There is another thing which we should know about that, called as a trisection. In trisection, what we are doing, divide divide the line segment divide the line segment into three equal parts. Three equal parts is called as a trisection. For example, if I say there is a line segment AB and there are 2 points P and Q, such that AP, PQ, and QB are at a same distance. They have same distance between them. Okay. The length of AP, the length of PQ, and distance between BQ is same. Distance between AP is equals to distance between PQ is equals to distance between QB. Then we say that this implies that P divides AB, P divides AB in the ratio 1 as to 2. For that we get the point P, and Q is the Q is the midpoint of Q is the midpoint of PB, P and B. Okay. From that two concept, we have to find the point P and Q. We will find the point P and Q. By using this concept, again midpoint, we have one shortcut. It's called as a satta in our class. Sattas, like that. If there is a if there is a parallelogram, okay.
If there is a parallelogram, just a moment. If there is a parallelogram with coordinates A, B, C, and D, and we know three coordinates, and we know the three coordinates, say x1, y1, z1. B has x2, y2, z2, and C has x3, y3, z3. We know that the the diagonals of parallelogram are bisecting each other. That means the midpoint of AC is nothing but the midpoint of a BD. They are equal. They are equal in a length as diagonals bisect each other. So from that, I have to find the coordinates of D. So the coordinates of D is very easy. X is equals to, what we are doing, we are adding the opposite vertex and subtracting the B opposite to D. Okay. Otherwise, you have to remember like that the sum of opposite vertices is same. Sum of opposite vertices is same. That means x1 plus x3 is same as the x plus x2. From that, x is equals to x1 plus x3 minus x2. Similarly, y1 plus y3 is equals to y plus y2. This implies that y is equals to y1 plus y3 minus y2. And z plus z2 is equals to z1 plus z3. This implies that z is equals to z1 plus z3 minus z2. Then we'll get the fourth vertex of that parallelogram. Another one, next formula is called as a centroid of a triangle. Centroid of a triangle. Okay. Let's say ABC is a triangle in three-dimensional geometry. A, B, C is the coordinates of three-dimensional geometry. Then A has the vertex x1, y1, z1. B has the vertex x2, y2, z2. And C has the vertex x3, y3, z3. And all we draw all medians. We draw all medians which bisect each other. Sorry, which intersect at a single point. Okay. This point G has coordinates x comma y comma z called as a centroid. Called as a centroid. Centroid is centroid is the point of intersection of point of intersection of all medians all medians of a triangle. All medians of a triangle is called as a centroid. Now it has the formula. For x, we should add x1 plus x2 plus x3 upon 3. Y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. And z is equals to z1 plus z2 plus z3 upon 3. This is the formula. Okay, this is the formula. And one more thing, G divides G divides all the medians, all the medians in 2 to 1 ratio. 2 to 1 ratio. That means it is 2, it is 1 only. Okay. The 2 is side to the vertex of a triangle and 1 is to the midpoint of opposite side. P, Q, R. Acha, you know na how to draw a median. We take a BC's midpoint P and we draw a line segment AP from the opposite vertex of that BC side. Then that AP line segment is called as a AP line segment is called as a median from A. Okay. This is the concept of a centroid of a triangle. Is there any doubt? Yes, anyone? I gave the various formulas for that. Okay. Let's see. Now we are going to solve some questions. We're going to solve some questions on the 3D geometry. Okay.
The first question, you should solve it. Do it fast. What is the answer? Yes. Use only the distance formula. What is the answer? What is the distance formula? Yes. The distance formula is x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square plus z2 minus z1 to the whole square. Na? Then do it. X2 minus x1. 1 minus 2 to the whole square plus 2 minus minus 1 to the whole square plus minus 1 minus 3 to the whole square. So in that we'll get minus 1 whole square plus 3 square plus minus 4 square. The minus 1 square is 1, 3 square is 9, and 4 minus 4 square Option is A. 16. Root 26. Option A is the answer. Correct. Now try the question number 2. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining this point, this and this. Yes. What is the ratio as given now? Read it carefully. It is 1 minus 2, 3, and it is 3, 4 minus 5, and the ratio is given as a 2s to 3. So we just multiply 2 to this coordinate and 3 to the this coordinate and divide it by 5. 2 threes are 6 plus 3 ones are 3 upon 2 plus 3 5. So the first coordinate is 9 upon 5. So option B and option C get option B and option D get cancelled. Now A and C. 9 by 5, 9 by 5, 2 by 5, 2 by 5. So we don't need to solve for the y coordinate. Now go for the directly third C coordinate. So for the C, 2 into minus 5 is minus 10, and 3 into 3 plus 3 threes are 9 upon 5, which is equals to minus 1 upon 5. Oh, it's wrong. 2 into minus 5 minus 10, 3 threes are 9 plus 9. Minus 10 plus 9 is minus 1 upon 5. So it has a wrong options actually. I think so it is a minus 1 upon 5. So the option C is the answer. D. What is the coordinate of D is there? Am I doing this correct calculation? 2 threes are 6, 3 ones are 3. 2 is to 3 internally, na? Yes, correct only. So we get the coordinates. We get the coordinates. The first coordinate is 9 by 5. The last coordinate is minus 1 by 5. And the middle coordinate is 2 fours are 8 minus 6. 8 minus 6 is how much? 2 upon 5. 2 upon 5. So the coordinates are 9 upon 5, 2 upon 5, and minus 1 upon 5. These are the coordinates. There is a no option in that. Okay. Let's see the question number 3. Find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points. What is the midpoint formula? Just we seen it. What is the midpoint formula? Yes. We just add and divide it by 2 na. We have to add the coordinates and divide it by 2. Yes. See here. Option A. ऑप्शन ए ना 4 और माइनस 2 ऐड करेंगे तो कितना जगह 2 डिवाइडेड बाय 2 1 minus 2 plus 8 is how much? Minus 2 plus 8 is 6 by 2 is 3, and 6 minus 2 is 4 upon 2 is 2.
So 1, 3, 2. Option A is the answer. Yes. Question number 4. How to solve it? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 4 minus 1 are collinear. Find the ratio in which B divides AC. B divides AC. Acha, for that, what we should do, just remember that very simple to solve it. This is a point A, this is a point C, this is a point B, and we take a ratio as a K to 1. K to 1, we take a ratio. The coordinates of A are 1, 2, 3, coordinates of B are 2, 3, 1, and coordinates of C are 3, 4, minus 1. I'm thinking only about the x coordinate. What is the formula for x? It is mx2 plus nx1 upon m plus n. I'm using this formula. Here x has the value 2, m has the value k, x2 has the value 3, plus n has the value 1, x1 has the value 1 upon k plus 1. Just cross multiply it, you will get 2k plus 1 is equals to 3k plus 1. Sorry, 2k plus 2. This goes there, this goes there. So 2 minus 1 is equals to 3k minus 2k. K is equals to how much? 1. K is 1 means it is the ratio 1 is to 1. That means B is the midpoint. B is the midpoint. See that 3 plus 1, 4 by divided by 2 is 2. 4 plus 2, 6 by 2 is 3. Minus 1 plus 3 is 2 by 2 is 1. So B divides AC in the ratio 1 is to 1. Okay. Let's see. Next question. Question number 5. Find the equation of the set of points which are equidistant from these points. Yes. How you solve this? Equidistance from the points. What the points are given? 1, 2, 3, 3, 2, minus 1. Na? Okay, let's see. I will give the solution for that. First, understood the concept, what it's saying. Okay, what it is saying. There are, suppose a point A is there. Point A is there with coordinates x comma y comma z. X comma y comma z. And there is a coordinate B which has the coordinates 1, 2, 3, and a coordinate C which has the coordinates 3, 2, minus 1. If I take a distance AB and a distance AC, distance AB and distance AC, they are equal. Okay, distance AB and distance AC, they are equal. Now what we are doing, we are using the formula of distance. Distance AB is equals to distance AC. Now how should we find the distance AB? X minus 1 to the whole square root of x minus 1 to the whole square plus y minus 2 to the whole square plus z minus 3 to the whole square is equals to root of listen, root of x minus 3 to the whole square plus y minus 2 to the whole square plus z plus 1 to the whole square, minus minus plus. Okay, now we are squaring on both sides. Squaring, after squaring, square root will get cancelled, this square root and this square root get cancelled. Now remaining with x minus 1 to the whole square plus y minus 2 to the whole square plus z minus 3 to the whole square is equals to x minus 3 to the whole square plus y minus 2 to the whole square plus z plus 1 to the whole square. These terms are same, so I cancelled it, and I have a minus b to the whole square formula. What is the formula? X square minus 2x plus 1. Here z square minus 6z plus 9. Here again x square minus 6x plus 9. Here z square plus 2z plus 1. Now you think x square get cancelled, z square get cancelled. This 9 get cancelled, this one and this one get cancelled. Now minus 6x goes there, plus 6x minus 2x minus 6z minus 2z equals to 0. So remaining with 4x minus 8z equals to 0.
dividing by 4, x minus 2z equals to 0. This is the locus. X minus 2z equals to 0. Option A is the answer. Did you got the what is the process to solve this type of a questions? If they are asking some geometrical conditions now, what they are given now, we go for that. What they are given, we go for that. Here distance is same, so I'm using the distance formula. From the distance formula we get the relation between x and z. X minus 2z is equals to 0. Now do the question number 6. If the centroid of a triangle is 1 2 3 and two of its vertices are 2 minus 1 3, 5 2 minus 3, then find the third vertex. Find the third vertex. Yes, you should solve it by using the centroid formula. Centroid formula, you should consider the remaining vertices of the triangle as x3. We know the x1, x2, and x. So use the formula that x is equals to x1 plus x2 plus x3 by 3 and get the answer. Yes, what is the answer? What is the answer? Is anyone? Okay, let's see. We are using the directly formula x1 plus x2 plus x3 upon 3 is equals to x. Or x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3. X has the value 1, x1 has the value 2, x2 has the value 5, and x3 I don't know about this. 3 is equals to 7 plus x3. So x3 is equals to 3 minus 7 is equals to minus 4. Okay, there are three options. Similarly, solve for y and z. Do it yourself only, students. Do it. Do it yourself. Y and z you have to calculate. What is the value of y? It's 2. Y1 is minus 1, y2 is 2, and we have to find the y3. 2 is equals to minus 1 plus 2 plus y3 upon 3. 3 2s are 6. Here 1 plus y3. So y3 is equals to 6 minus 1 equals to 5. So minus 4 comma 5. Acha, there are two options again. For the z, z is equals to z1 plus z2 plus z3 upon 3. So z is how much now? 3. Z1 is how much? Z1 is 3. Z2 is minus 3 plus Z3 upon 3. So 3 3s are 9 is equals to 0 plus Z3. So Z3 is equals to 9. So option is minus 4, 5, 9. Which option? A. A option is the answer. So let's see the last question today's. Find the distance of the point 2, 3, 4 from the x-axis. I gave the already the formula. What is the distance from the x-axis? Distance from x-axis is how much? Yes, what is the formula? For a point px comma y comma z, what is the distance from the x-axis?
Yes, it's root of y square plus z square na. So here root of 3 square plus 4 square. 9 plus 16, 25, which is equals to 5 units. So the option A is the answer. Okay. Remaining PDF I will share with you people. You have to solve it. Okay. And if you have any doubt about that, let me know. Okay. Now we are going to learn about one more last concept of the general aptitude in mental ability, that is data sufficiency. Okay. Read it carefully. Data sufficiency questions in the IMU CET General Aptitude section test your ability to analyze a problem. We have only analyzed a problem. We don't need to solve it. Listen it carefully, okay? We don't have to solve it and determine if the given information is sufficient to solve it or not. We do not need to actually solve the problem. Okay, the questions a mathematical or a logical problem. Okay, the question is a mathematical or a logical problem. The statements, two statements, first and second, providing information. Your task is decide if each statement alone or both together are sufficient. Okay, and we have four answer choices. We going to take it. Logical reasoning, mathematical knowledge, and problem solving assessment focus on efficiency. Don't solve or simplify. Consider statements independently, avoid assumptions, and practice. Okay. This is the concept for the data sufficiency. Now, what is the value of x plus y? If I know the value of x minus y is equals to 2 and x square minus y square is equals to 8, is that from two statements, either am I able to find the value of x plus y or not? Yes. I have the two values. I have the value of x minus y is equals to 2 and I have the value of x square minus y square equals to 8. From that two statements, am I able to solve the value of x plus y? Yes or no? Yes or no? Sir, we can equation number we can square both the sides. Square both the side. Then am I able to get the value of x plus y from the given data? Then we can add. Yes. Then we Yes can or add no both of only? them. Yes, we can get, but we are not adding it. Okay, what we are doing, listen carefully. Is x square minus y square is equals to 8. So I'm using the formula for a square minus b square, which is a minus b, a plus b. Correct now? So I will get x minus y, x plus y is equals to 8. From that, x plus y is equals to 8 upon x minus y. And x minus y is 2. So I get the value of x plus y as a 4. We don't need to solve it, but I gave the solution for that. For from that two statements, I get that the both the statements are sufficient to solve together. Okay, the both statements are necessary. Both the statements are necessary to find the value of x plus y. Did you get the my point? Did you get the my point? What I'm saying? Yes, sir. How to solve it? Yes or no? Yes, sir. I get it. Okay, let's see. Question number two. Question number two. What is the area of a rectangle? The perimeter of the rectangle is 20 and the length of the rectangle is twice its width. Can I able to solve from these two relations? Can I get the value of a rectangle? Area of the rectangle we want.
What is the perimeter formula for the rectangle? Yes, let me know first. Perimeter formula. Perimeter of a rectangle is 2L plus 2W. 2 times L plus B. Correct, na? Is 20. Length plus width, na? So length plus width is 10 आ गया, बराबर? Now, the length of the rectangle is twice its width. So length of rectangle is 2 times B. So 2B plus B is equals to 10. So B is equals to 10 by 3. If B is 10 by 3, then L is 20 by 3. Correct? So I have the value of a length. I have the value of a breadth. What is the formula for area of a rectangle? What is the formula for area? What is the formula for area? Length into breadth. So am I able to get the values now? 200 upon 9 square units. Correct, na? So from this, I get that the both the statements are necessary to solve the rectangle of the area. So the option C is the correct answer. Yes. Question number 3. Ah, I want the value of A by B from the given statement. Is it possible to get the value of A by B from the given statement? No, na. As these two statements are similar only, na. These two statements are similar only. See, na. A is equals to 2B plus 4. If I get there, A minus 2B is equals to 4. A minus 2B is equals to 4. This data is not sufficient as it is a two variable, two variable and one equation. Two variable and one equation. To solve the two variable linear equation, na, we need two equation. We need two equation. And it has a only one equation. So it is not a sufficient data. So statement one and together are not sufficient to get. Okay. So question number 3 is the answer. Yes. What is the age of John? Listen carefully and solve it. Hmm. John is twice as old as his sister. His sister is 10 years old. Yes. Both are needed, sir. Both are sufficient to get the answer. Na? Yes. C is the answer. Fifth one. Fifth one you have to solve it.
Only one statement is required. Which one? The first one. First one, yes. Statement 1 alone is sufficient. Statement 2 is not necessary, na? It is either or possible or not. But the first statement is always correct. Correct, na? I gave one example for the second one, which is not correct. If I say x is equals to 1 and y is equals to minus 3, then subtraction 1 minus minus 3 should be 1 plus 4 should be greater than 0. 1 plus 3, which is equals to 1 plus 3, which is equals to 4 greater than 0. But the addition of these two numbers, 1 and minus 3, is minus 2, which is less than 0. Second one is not necessary. The statement first alone is sufficient for the given information. Okay. Let's see. The next question number 6. What is the value of P? Statement 1. P square is equals to 9. P is positive. Only statement one, sir. One statement. क्यों ऐसा? Because we can directly get the square will go on right hand side Hmm. and it will give value of 3. P square is equals to 9. Then what is the value of a P? 3. Plus minus 3, na? P has now two choices, na? Plus minus 3. From that, we'll get two values, different values. Okay. For the perfect value, the second statement is P is positive. So I get the P as a 3 only. Did you get my point? What I'm saying? P Yes, square sir. is equals to 9. That means P is equals to plus minus 3, na? That means I have two values. Either it is positive or negative. From the second statement, I get that P is positive. So P square equals to 9 implies that P is equals to 3. Otherwise, it implies that P is equals to minus 3 as well. So both the statements together are sufficient to find the value of a P. Correct? Yes. What is the distance between point A and B? Where point A is at 1, 2 on a coordinate plane, point B is at a 4, 6 on coordinate plane. What we need? Both we need, only one is need or not sufficient data. What type of a data is that? Yes. What type of a data? The both are needed or only one is needed to find the distance between A and B? We need both points, na? If only one, if I want to find the distance between AB, I know the point A, but I don't know the point B. Or either I know the point B but not A. Is it possible to find the distance between that two points? Is it possible? No, no. So the both the statements are sufficient. Okay. Together sufficient. Let me ask one more question for this question. What is the distance between A and B for these 2 points? What is the distance between these 2 points? I'm asking the question. We don't need to solve in this. I'm asking only for you to get the answer for the distance formula. What is the distance formula for in a 2D plane? 5. 5 is the answer. Correct, correct. What we are using the distance formula x2 minus x1 to the whole square plus Yes, y2 sir. minus y1 to the whole square. Okay. Let's see question number 8. Yes. Question number 8. What is the price of pen? 5 pens and 2 pencils cost rupees 10. $10 जो ऐसा भी है. 2 pencils cost 10. 2.
Am I able to find the value of a pen from that two statements or only one statement? Sir, we need both statements. We need both the statements. Na? From the pencil value, I subtract the pencil value. It is remaining 8. So 5 pens are $8 में आ जाएंगे. Correct ना? So we need both the statements. This also, this also. So the option C is the answer. Correct? Question number 9. Is the number n divisible by 6? If a number is divisible by 6, then n is divisible by 2, n is divisible by 3. Which one of the is correct or sufficient? Yes. What is the divisibility test for the for the 6? The number should be divisible by 2 and 3, na? The number should be divisible by 2 and 3. So both the statements are sufficient, okay, to get this statement. Okay. Let's see. Question number 10. Both statements are required. What is the speed, by the way? What is the speed? Distance upon time. 200 upon 4 is 5 kilometer per hour. Correct, na? 5 kilometer per hour. Oh, sorry. 50 kilometer per hour. Sorry. Both the statements together are sufficient. Question number 11. What is the value of x? X square plus 2x plus 1 equals to 0. Statement to x is a real number. Don't go for the assumption. Read it carefully. We have to choose the most appropriate answer. Okay. Most of the times we get the conclusion that both the statements are sufficient to solve for the each question, but it is not necessary. Check it carefully. Yes. Value of x is -1. Value of x is -1. Do you get it from the statement 1 or 2? Statement 1. So we need it for the statement 2. No, no. So the most appropriate answer is statement 1A alone is sufficient to find the value of x. To find the value of x, the statement 1 is alone needed. As x square plus 2x plus 1, it is nothing but x plus 1 to the whole square equals to 0. This implies that x plus 1 equals to 0. This implies that x is equals to -1. Correct? So the option A is the answer. Yes, question number 12.
What is the area of a triangle? The base of the triangle is 10, the height of the triangle is 5. Then what is the area? Sir, both statements are required. What is the formula Both. for that? Half into base into height. Half into base into height. This is the formula. So the option C is the answer again. Correct now? Okay. Question number 13. Find the value of a plus b plus c. If I know the value of a plus b and c, can I able to find the value of a plus b plus c? Yes, sir. Just add them, na? So we need the both the statements. So the option again C is the answer. Option C. Do the question number 14. Both statements are required. Both statements are correct. As I know the value of a y for the given linear equation, then I'm able to find the value of x. Correct, na? If I put the value of y equals to 1, then I will get the value of x. So both the statements together are sufficient. If x an integer, 2x is an integer, x by 2 is an integer. Only statement 1. Only statement 1. 1. Why not 2? Because it's not integer. X by 2 is not an integer. If I take the value of x is 2, then Then it is. uh, Then it is. then the statement is correct or not? Both are correct. Oh, you get trapped mind being. Okay, the answer is only one, as the second one is not a sufficient condition for that. If x is equals to 1, 1 is also an integer. 1 is also an integer, na? But 1 by 2 is not an integer. Correct? But 1 into 2 is always an integer. So the option A is only answer. Option A, not option C. Okay. Both statements are not sufficient. If a number is an integer, then if we multiply it by an integer, then it again gives an integer only. So the statement 1 is sufficient to get the answer, not 2. Did you get my point? What I'm saying? 1 is also an integer, na? You have to tell that. You think only for the 2 if I say 2. Why you don't think for 1? 1 is also an integer. If I take the value of a 1, if I multiply it by 2, I will get the 2. But if I divide it by 2, then it will give 1 by 2, which is not an integer. So the answer is what? Only statement 1 is sufficient to say that x is an integer, where 2 times x is an integer. Okay. Let's see the next question. What is the average of x, y, and z? Can I able to find the average of x plus y is given and z is given? Both are sufficient. Sir. Both are sufficient. As I get the value of x plus y plus z. It is how much? What is the value of x plus y plus z? 15 by 15. 3. So what is the average? 5. 5. So the both statements are
necessary or not? Both statement together sufficient. Yes, very good. Question number 17. Yes, question number 17. Option C. C. Why? Both are sufficient to find x square plus y square. How will we find the x square plus y square from these two values? X plus y to the whole square minus 2 into xy. Will give you the formula of x square plus y square. Y. We need both the values, correct. So the option C is the answer. Okay. What is the number of students in a class? If each students get 3 chocolates, 6 chocolates are left over. If each students get 4 chocolates, 3 chocolates are lacking. Wow. Wow, wow. Yes, question number 18. Yes, anyone got the answer? No, sir. So what you are thinking now? How to solve this one? I want the number of students and I will get the two statements that the first statement is saying if I give the 3 chocolates to the each students, then I have left with 6 more chocolates. And if I give it 4, then I need more 3 chocolates to distribute it equally. 9 students. Yeah, 9 students are there. But is it two both the statements are necessary to solve this? Yes, sir. Yes, correct only. Let us see if I say x is the number of students, x is the number of student. From the first that the number of chocolates are fixed now. So 3 chocolates I give to the each students and I have extra 6 chocolates. If I give more chocolates to each student, then I have I think of 3. That means minus 3 I have chocolates.
So rearrange the equation, you will get 6 plus 3 is equals to 4x minus 3x, x is equals to 9. 9 students are there, and how many chocolates? 33 chocolates are there. 33 chocolates. Okay, question number 19. Both statements are correct, are sufficient. Both statements are Sufficient. again. Anyone has any other answer? We need both the statements. You are saying option C. C. Try it. After that, I will tell what is the answer. Hmm. Shalisa, from the statement one, what I am saying, if x is positive, x is greater than zero, is the value of x as plus minus, but minus two is not possible as it is positive. From that, I will get the value of x is equal to 2. Yes, from the statement one. From the statement two, I get the value of x is equal to 2. But they are not dependent alone each other. And they are dependent on each other. Okay. Each statement is sufficient. Okay, done. Is it your one? Like that down. We solve now. With the number of students, we have to solve both the solution. But not in the question. Sir, your voice is not audible.
Am I audible? Yes, sir. Independently, na. So it is not necessary that the both the statements together will make create the value of the x. Independently, the value of x will be the value of plus two from the first one as well as from the second one. So instead of question number 20, number 20 you have to follow. Question number 20. Both statements are required.
स्टूडेंट्स एक मिनट सिर्फ लोड हो रहा है, चालू कर रहा हूँ मैं। यस, हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? Yes, कल sir. Yes, sir. तो बेटा देखो, कल ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस आपने किया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? कि और कौन से चैप्टर्स बाकी है बेटा? ग्रेविटेशन के बाद ऑस्सिलेशंस हुआ है, या एक काम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से बहुत पोर्शन आता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यू फिनिश इलेक्ट्रोस्टैटिक? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है क्या? नो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दो चैप्टर से बहुत सारा पोर्शन आता है। तो लेट अस स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ। सर हो चुका है, स्टार्टिंग में ही हुआ था ये चैप्टर। अच्छा, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे बहुत सारा पोर्शन आता है। नीट रूम में आओ, नीट रूम में। थर्मोडायनेमिक्स हुआ है तुम लोगों का? No, sir. तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी अच्छा पोर्शन आता है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? Thermodynamics is the branch of physics in which we will study about heat, study of heat flow. हाँ, ठीक है ना? स्टडी ऑफ हीट फ्लो, थर्मोडायनेमिक्स से भी आता है ना क्वेश्चन? हाँ, बराबर। तो देखो बेटा, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट। तो हीट क्या है, आपको पता होना चाहिए। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स यू अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। बात समझ में आ रही है? Heat is a sensation. Heat gives you sensation of warmth. This is the form of energy which gives you sensation of warmth. तो हीट की जो यूनिट है, क्योंकि वो एनर्जी है, तो इसके लिए यूनिट ऑफ हीट जो है एनर्जी का यूनिट होगा। अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। बट कैलोरी भी हो सकती है, कैलोरी इज ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। अर्क भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी कितने जूल का होता है। पता है 1 कैलोरी कितने जूल का होता है? 4.2 जूल का होता है। कोई कोई इसको 4.18 भी कहता है। ठीक है, 4.18 भी कहते हैं इसको, 4.2 भी लिख सकते हैं रफली इसको। ध्यान से समझना। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली जब बॉडी को हीट किया जाता है तो होता क्या है। रिमेंबर, हीट एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है? यस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 यूनिट्स है। केल्विन इज सिलेक्टेड एज एसआई यूनिट। केल्विन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो देखो, इसका कन्वर्जन है, आप ये दो इक्वेशंस लर्न करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू 9/5 C+32 and K is equal to C+273. These are the two equation for temperature conversions. ये हम लोग हो सकता है क्वेश्चन में हमें लगेगा, टेम्परेचर को अगर आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, इस तरह से अगर करना है तो आपको ये दो इक्वेशन करनी पड़ेगी याद। F फॉर फ़ारेनहाइट, K फॉर केल्विन, C फॉर सेल्सियस। याद रखो बच्चों, बॉडी का एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। मालूम है व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? हम उससे नीचे नहीं जा सकते। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी is -273.15 degree Celsius. This can also be written as 0 Kelvin. 0 Kelvin. This is not written okay. This is written 0 Kelvin. क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को ही 0 केल्विन अज्यूम किया,
इसलिए केल्विन में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव टेम्परेचर्स आर नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल. देयरफॉर केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल. इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं. ठीक है बेटा. अब देखो आगे चल करके हम थर्मोडायनामिक्स में गैस की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. इतनी बात समझ में, ये तो बेसिक्स में आता है कि हम लोग 9th और 10th में भी पढ़ते हैं. ठीक है ना. आगे चल के देखो अभी हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना है. आइडियल गैस किसको कहते हैं? आइडियल गैस इज अ गैस विच ओबेज सर्टन लॉज. ठीक है ना, विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. PV is equal to nRT. This is a very important equation which will be used for many questions. P for pressure. यहाँ P क्या है बेटा? Pressure of the gas. V for volume. N क्या है? N number of moles है. याद होगा आपको मोल कंसेप्ट होता है. R is ideal gas constant. ये आइडियल गैस कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू होती है, आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ R. एंड T फॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस. इट मस्ट बी मेजर्ड इन केल्विन. केल्विन में होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. इसके क्वेश्चन करने के लिए इसको केल्विन में करना पड़ेगा. अब देखो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात चल रही है, तो इसके लिए हम लोग यूनिट ऑफ प्रेशर भी बात करते हैं. यूनिट ऑफ प्रेशर बहुत सारे है, प्रेशर के भी बहुत सारे यूनिट्स है. सबसे पहला यूनिट मैं लिखता हूँ पास्कल. PA यानी पास्कल. तो पास्कल में जब यूनिट रहेगी तो ये SI यूनिट बनेगी. दिस इज द SI यूनिट. पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज होगी. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स के लिए हमने न्यूटन लिखा, एरिया के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा. देयर आर अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर आल्सो व्हिच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. what is ATM? Do you know what is ATM? ATM means atmospheric pressure. Also another unit is bar. ये 3 यूनिट्स प्रेशर के याद रखने हैं. हमें हर वक्त उसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पास्कल इज सेलेक्टेड एज SI यूनिट. तो अब आपको ये पता होना चाहिए इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे. 1 atmospheric pressure is 1.013 into 10 power 5 Pascal. See, whenever pressure is given in atmospheric pressure or ATM, it must be converted into Pascal. And Pascal में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.013 into 10 power 5. This will be the factor of conversion between ATM and Pascal. अभी अगर बार में प्रेशर दिया होता है तो 10 power 5 Pascal is the conversion factor. So whenever pressure is not given in Pascal, you have to convert it into Pascal, because Pascal is selected as SI unit. Pascal एक साइंटिस्ट के नाम थे. तो इन ये गैस की इक्वेशन के ऊपर ही देखो 3 लॉज बनते हैं गैस के. अभी बॉयल्स लॉ किसको बोलेंगे? ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रिमेन्स कांस्टेंट. देखो अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स N, R और T तीनों भी कांस्टेंट हो गए. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो देखो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ. व्हाट इज चार्ल्स लॉ? डू यू नो चार्ल्स लॉ भी है. चार्ल्स लॉ में हम बेटा प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे. व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इट्स वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बिकॉज प्रेशर को अगर हटा दिया, N और R को हटा दिया, तो देखो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बचते हैं. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. द नेक्स्ट थिंग इज लुज़ैक्स लॉ. ये सब साइंटिस्ट के नाम है. तो लुज़ैक्स लॉ क्या बोलता है? इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट. सी, अगर मैंने वॉल्यूम को हटा दिया, N और R भी कांस्टेंट ट्रीट किया, then pressure will be directly proportional to temperature. This is called Luzak's law. Have you understood this? तो और दूसरी बात, आपको नंबर ऑफ मोल का भी कंसेप्ट याद रखना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास and number of molecule divided by Avogadro's number. These are the two formulas for number of moles which you must have studied in mole concept. Correct? These are the basic things about gases which you must know before solving the questions of the gas. Okay बच्चों, कुछ टेंशन? यहां तक सब समझा ना कि बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं? These are the basics, so ये समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट देखो, अब हम लोग वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं. समटाइम्स यूनिट ऑफ वॉल्यूम
टेम्परेचर का यूनिट हो गया, वॉल्यूम का यूनिट के ऊपर आते हैं अभी। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, what is the unit of volume? Definitely unit of volume is meter cube, and this is the SI unit. Whenever something is not given in SI unit, you have to convert it into SI unit. तो यूनिट के अदर यूनिट, वॉल्यूम के अदर यूनिट्स भी आएंगे। लीटर इज द मोस्ट फेमस यूनिट फॉर वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए लीटर और डीएम क्यूब। डीएम क्यूब मतलब क्या? डीएम मतलब डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, और ये लीटर है बेटा। आर यू गेटिंग दिस? सो आपको ये बात पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब होता है, यानी कि लीटर और डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज है। So whenever liter is given, you can write it in dm cube, but we have to convert everything into SI unit. तो SI unit में इसकी वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेसी मीन्स 10 पावर माइनस 1 होता है ना, डेसी मीन्स 10 पावर माइनस 1, तो 10 पावर माइनस 1 का क्यूब करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। सो वी हैव टू डू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 1 डेसी के लिए लिखा, और उस पर क्यूब था तो क्यूब कर दिया, तो 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा फाइनली। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है ना, सबको समझ में आया इतना? द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी दो टाइप्स है बेटा। अब देखो, कोई भी गैस लिया हमने, कोई भी सब्सटेंस लिया, इफ अ मटेरियल इज हीटेड इट्स टेम्परेचर विल राइज। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है ऑब्वियसली, राइट? जैसे जैसे हम इसको हीट देंगे, whenever something is heated then its temperature will rise definitely। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि हमने कोई मटेरियल लिया तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हीट करने के लिए, सोच करके देखो, ये बात पता करने के लिए कि अगर हमने कोई भी सब्सटेंस को हीट किया और हमने उसके 1 kg सब्सटेंस को 1 kg सब्सटेंस लिया और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई। इफ आई नो दैट 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 1 kg को इतनी हीट लगती है, तो मैं कितने भी का कैलकुलेट कर सकता हूँ। जिस तरह से हमें एक गुलाब जामुन की कीमत पता होती है, तो हम कितने भी गुलाब जामुन की कीमत पता कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड इन साइंस। सो व्हेनेवर वी नो 1 kg substance needed so heat required to rise the temperature by through 1 degree Celsius, we can calculate the heat required for any amount of substance and any amount of rise in temperature. Then this particular heat required for 1 kg substance and 1 degree rise in Celsius is called as specific heat capacity. This is the definition of principal specific heat capacity. क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस आपने उठाया, उसका 1 kg लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करो, और जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट डेफिनेशन, पे अटेंशन। नाउ आई विल टेक द 1 mole of a substance. Instead of 1 kg, now I will take 1 mole. Do you know what is the difference between kg and mole? Kg is the quantity of matter measured in mass, and mole का तो concept पता ही है आपको, we count number of molecules. When the number of molecule becomes equal to Avogadro's number, that is called as 1 mole. The quantity of substance is called as 1 mole. बेटा, जो दर्जन का हिसाब रहता है ना, 12 के सेट को क्या बोलते हैं? 1 दर्जन बोलते हैं। वही हिसाब किताब मोल का भी रहता है, क्योंकि मोल में हम लोग अवोगाड्रोस नंबर के जितने मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यस। तो 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं, हीट रिक्वायर्ड को हम कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। See, the only difference is 1 kg and 1 mole. So this is called as molar specific heat capacity. This is definitely different for different substances. Obviously 1 kg substance अगर मैंने आयरन का लेना है, उसको अलग हीट रिक्वायर्ड होगी, 1 kg कॉपर लूंगा तो अलग हीट रिक्वायर्ड होगी। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एज वेल एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन
depends on the material itself. Remember बच्चों, principal specific heat capacity is denoted by the letter S, capital S, and molar specific heat capacity is defined by letter C, capital C. So through its definition we can write the formula for it. See, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर S का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर करेंगे. How we have defined that? Amount of heat required per unit rise in temperature per unit kg ना, per unit mass. तो per unit mass को mass से डिवाइड किया, heat required को Q से डिनोट करते हैं, और उसको mass से डिवाइड किया और डेल्टा T से भी डिवाइड किया. तो क्या कैलकुलेट हो गया बेटा? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T. नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोगों को हीट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना होगा, व्हेन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन, then we can use Q is equal to MS delta T. This formula will be very helpful for the numerical. Are you getting this? और यहाँ पर C को कैसे डिफाइन करेंगे? How to define C? C can be defined as amount of heat required per unit mole per unit rise in temperature. Correct? Same definition, just mass is replaced by number of moles. So therefore the formula will become Q is equal to NC delta T. Have you understood this? So specific heat capacities are used when the temperature of the body rises. Correct? Specific heat capacity is always used when the temperature of the body has to be increased. So in order to calculate what is the heat required, we can use this formula, and the things will be very simple. Now again, you know there are three states of matter. अभी हम लोग states of matter पर आते हैं. The very first state of matter is called solid. Another state is called as, yes, liquid, and next is gas. जैसे वाटर के तीन स्टेट रहते हैं, लिक्विड स्टेट को वाटर कहते हैं, सॉलिड स्टेट को आइस कहते हैं, और गैसियस स्टेट को स्टीम कहते हैं. So we can convert the solid state into liquid state by heating the substance. When the substance is heated, the solid state will be converted into liquid state. And the process of converting solid into liquid is called as melting. Right? We can, if we freeze the liquid, if we lower the temperature of the liquid will be converted into solid. So interconversion can happen. And that process is called as freezing. And this happens at a particular temperature called melting point or freezing point. देखो बेटा, हीटिंग और कूलिंग का काम है. अगर सॉलिड को हीट किया जाएगा तो मेल्ट होकर के लिक्विड बनेगा. लिक्विड को दोबारा आप कूल करोगे तो वो फ्रीज होकर के सॉलिड बनेगा, लेकिन दोनों सेम टेम्परेचर पे होगा. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है. सेम चीज है, सिर्फ हीटिंग और कूलिंग का फर्क है. हीट को एक्सट्रैक्ट या ऐड करने का फर्क है बस. Same for liquid. When the liquid is heated and its state is converted from liquid state to gaseous state, the process is called as boiling. Okay, beta? The process is called as boiling. It can also be called as vaporization. Okay? When the gaseous state is converted into liquid state, the process is called as condensation. The process is called as condensation. Have you understood? Now there is a twist in this concept. Sometimes when the situation is just right, the solid may be converted into gas without converting into liquid. एक तो ये है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में. सो जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन. बेस्ट एग्जांपल है कॅम्फर. कॅम्फर जो कापूर होता है, मराठीत त्याला कापूर म्हणतात. कापूरला काय असते, त्याची लिक्विड स्टेट डजंट एक्झिस्ट. कळलं का? तो उसकी लिक्विड स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती है, तो डायरेक्टली वो सॉलिड स्टेट से कहा जाता है गैसियस स्टेट में जाता है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब ठीक है ना. यस, कोल को हीट नहीं बेटा, बर्न करते. हीटिंग एक अलग प्रोसेस है, बर्निंग अलग प्रोसेस है. बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस. चलो खैर आगे बढ़ते हैं. जब गैस को हम फ्रीज कर, ये
कूल करते हैं और वो सॉलिड स्टेट डायरेक्टली अचीव करता है, तो उसको हम कहते हैं एंटी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का उल्टा। और कभी कभार इसको डिपोजिशन भी कहते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़े हो तुम लोग डिपोजिशन। बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। तो अपने को मेजरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पर ध्यान देना है। मेल्टिंग पॉइंट किसी किसी सब्सटेंस की याद रखना है। मोस्ट कॉमनली मैं सब्सटेंस दे देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। फ्यू मेल्टिंग पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। सबसे पहले तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है। व्हाट इज द वाटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? 0 डिग्री सेल्सियस. Then you have to remember the melting point of iron, that is 1500 degrees Celsius. 1500 degrees Celsius. Then you have to remember melting point of tungsten. Why for tungsten? Tungsten is the substance in periodic table whose melting point is highest. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है। और पता है कितना होता है? गूगल पे चेक कर लो, रफली 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन हैज अ वेरी ह्यूज मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए टंगस्टन का यूज करते हैं हम लोग बल्ब के अंदर फिलामेंट में, एज अ फिलामेंट यूज करते हैं टंगस्टन को, बिकॉज बल्ब इज हीटेड वेरी मच, इट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देयरफॉर टंगस्टन इज यूज्ड। बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी टंगस्टन का यूज होता है, क्योंकि जब बैलिस्टिक मिसाइल ब्लास्ट होती है तो बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, तो मेटल इमीडिएटली पिघलना नहीं चाहिए, तो इसके लिए टंगस्टन का यूज करते हैं ताकि उसकी टफनेस बाकी रहे। ओके बेटा, यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया कि सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। व्हाई सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड? आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सॉलिड कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल आइस, तो आइस के जो बॉन्ड्स होंगे वो रिजिड होंगे। इन केस ऑफ सॉलिड, द बॉन्ड्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी रिजिड, राइट? सॉलिड के केस में बॉन्ड्स काफी ज्यादा रिजिड होंगे। वही अगर मैं लिक्विड लेता हूं, तो लिक्विड के केस में आप देख सकते हो, लिक्विड के केस में फ्लेक्सिबल बॉन्ड होती है। द बॉन्ड्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ लिक्विड विल बी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना? देन फॉर द गैस देयर विल बी नो बॉन्ड। गैसियस स्टेट में इफेक्टिवली कोई बॉन्ड नहीं होती है, ऐसा अज्यूम किया जाता है हमें। तो आप सोचो ना, हमें अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ हीट रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज बॉन्ड को कमजोर बनाना है, बॉन्ड को फ्लेक्सिबल बनाना है। सॉलिड के केस में द बॉन्ड्स वेर रिजिड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, अब उसको फ्लेक्सिबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। तो कंसेप्ट ये है बेटा, कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने 1 kg सब्सटेंस लिया, 1 kg सब्सटेंस को लिक्विड सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बनाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? इट शुड बी डिनोटेड बाय LF। देखो मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूं। LF की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert solid state of a substance into liquid state at its melting point। ये काम हमेशा तो होगा नहीं, ये काम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, सॉरी मैं 1 kg भूल गया, 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट, क्योंकि ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ मैटर ये करेगा ना, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा क्वांटिटी रहेगी, उतना ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतने ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये नोटिस किया कि जब हम सब्सटेंस को हीट करेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉन्ड ब्रेक होकर के, बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होकर के रिजिड बॉन्ड टू फ्लेक्सिबल बॉन्ड बनती है। एंड द मेल्टिंग पॉइंट एट दिस हैपेंस ओनली एट मेल्टिंग पॉइंट, and the amount of heat required to convert solid state of a substance, that is 1 kg, into liquid state at its melting point is called latent heat of fusion। इसी को हम लोग latent heat of fusion कहेंगे।
और ये भी देखा गया है कि टेम्परेचर नहीं बदलता इसके ऊपर। मतलब अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस का आइस लेते हैं, देखो ये है आइस, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। वाई? बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। अब इस 1 kg का आइस लिया, ऑब्वियसली ये 1 kg आइस लिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हीट करेंगे बेटा, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, एंड द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज वाटर, and its temperature remains same. Temperature will not rise. Why the temperature is not risen? Because the required given heat is utilized to break these bonds. एक एक ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हो जाएगी, therefore no heat will be left for rising the temperature. इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, चेक करो। whenever state of a substance is converted, temperature will not be risen, temperature remains constant. The given heat will be used for the given heat will be used for converting the state, that is breaking bond. ये ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है। इसके लिए हम लोग इसको इसी इसी हीट रिक्वायर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो हीट कर रहे हैं आप, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, रिमेंबर वाटर के लिए सिर्फ याद रखनी है, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। वाटर के लिए हीट रिक्वायर्ड विल बी 80 ग्राम पर कैलोरी। This will not be given in the numerical, और ये sometimes पूछ भी लेता है। So it is a fact that scientists have measured water के लिए latent heat कितनी रहेगी? 80 कैलोरीज पर ग्राम। अब देखो ये कैलोरी पर ग्राम है, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, केजी को भी कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो कैलोरी को जूल में कैसे करेंगे? 4.118 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर बताया मैंने, देखो ऊपर सबसे पहले वही बताया था मैंने, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। और ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻³ से। तो अब वो करके देख लेना, इसको एसआई यूनिट में भी लिख देना। बट यूजुअली द साइंटिस्ट हैव a tendency to calculate everything in calorie, therefore I have written the value in calorie only, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। सेम अगर लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये हाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी भी कहते हैं इसको, एलवी। ओके बेटा, तो एलवी की डेफिनेशन अब क्या होगी बताओ, आप लोग बताओ अभी, ऑनलाइन वाले बोलोगे एलवी की डेफिनेशन? Yes, the amount of heat required to convert liquid state of 1 kg of a substance, 1 kg of substance into gaseous state। और ये काम हर वक्त नहीं होगा, दिस हैपेंस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, दिस हैपेंस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड latent heat of vaporization। ठीक है बच्चों, यानी कि अभी देखो इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। अगर हमने वाटर लिया, देखो ये वाटर है, वाटर मींस लिक्विड स्टेट ऑफ H2O, राइट? दिस इज वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, करेक्ट? जब हम इसको हीट करेंगे क्या होगा? जब हम इसको हीट करेंगे तो अच्छा वाटर भी कितना लेंगे? 1 kg लेंगे ना यार, 1 kg और यूनिट मास लेंगे 1 kg ऑफ वाटर लेकर के उसको हीट करेंगे और फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम बन जाएगा बेटा। तब भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? नोट डाउन, व्हेनेवर द स्टेट गेट्स कन्वर्टेड टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर विल नॉट बी चेंजिंग। रीजन, जो भी हीट गिवन थी वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किसके लिए यूज हो गई? स्टेट चेंज होने में यूज हो गई। इंटरनली क्या हुआ? ये जो लिक्विड के फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स थे, हीट ने उस पर अटैक करके उन बॉन्ड को ब्रेक करके नो बॉन्ड में कन्वर्ट किया।
तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो तब भी बॉन्ड पर अटैक होगा, लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगी तब भी बॉन्ड पर अटैक होगा। तो इन दोनों में अपनी दी हुई हीट पूरी पूरी यूटिलाइज हो जा रही है। इसके लिए टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली द हीट only the state of the substance gets changed, and that amount of heat given to the substance is called as LV. LV is nothing but latent heat of vaporization. लेकिन ये होना चाहिए 1 kg, हाँ बेटा, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मैटर भी ये करेगा। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है वाटर के लिए? आपको याद रखना पड़ेगा 540 कैलोरी पर ग्राम है। मतलब 1 ग्राम पानी को हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम गैसेस लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, 540 कैलोरीज पर ग्राम इज रिक्वायर्ड। दिस इज फॉर वाटर। ऑब्वियसली मोस्टली हम लोग किसको हीट करते हैं? वाटर को हीट करते हैं। तो ये वाटर का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन याद रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऊपर बता देता हूँ, मैंने बताना भूल गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम बोल रहे थे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर भी याद रख लो, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ये भी आपको याद रखना है वाटर के लिए। एकदम सिंपल है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। एनी डाउट? तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, स्पेसिफिक हीट वाला। उसके बाद हमारे अभी थर्मोडायनेमिक के कुछ कंसेप्ट बाकी है ना। दिस वी हैव फिनिश ऑल द कंसेप्ट ऑफ गैसेस। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट thermodynamic, isothermal process, adiabatic process, those processes as well as first law is very important, transfer of heat पढ़ लेंगे, और कल के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई विल शेयर द नोट्स और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं, 9:40 को खत्म करना है ना? हेलो, हाँ 9:40 को खत्म करना है ना? हाँ जी। अभी कौन आ रहा है इधर? हाँ फिर, हाँ करेंगे ना। जी मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, है भेजता हूँ। वही वाली अपनी 250 MB वाली, वही। मैं भेजा ना आपको? नहीं भेजा क्या? फिर से भेज, ये वाली, ये तुम्हारा ही व्हाट्सएप है ना? हाँ, सुबह नहीं, शाम में मैं तुम्हारे लिए खास आता। 100% आज आना ही है, 100%। शाम में 7, 7:15 बजे अपन मिलेंगे नमाज के फौरन में। किसका पहले?
इसमें है। इंग्लिश ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस ही हो पाएगी। जनरल अवेयरनेस हो पाएगा। 40 40 नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं। शेयर करना पड़ेगा ना। जरूर गाड़ी लिख लो ना। लिख दूंगा पूरा तो लिखा जाएगा। शेयर करने के बाद फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा कुछ भी। लिख पाते ना छोटा सा। हाँ बोलो बोलो। आला आला चालू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। हम लोग जो है ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स जो है आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है मेन 5 ओशियंस है, जिनको हम नॉर्मली ऐसे ये ट्रिक से याद रख सकते हैं पैसा बोल के। ठीक है। ये पैसिफिक ओशन तुम्हारा जो कि सबसे बड़ा है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड ये आर्कटिक ओशन। ठीक है, इसको हम लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, पैसा ट्रिक से। इसमें ये सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है। और ये जो है इंडियन ओशन, ये हमारे कंट्री के इंडिया के कंट्री के प्रेजेंस की वजह से इसका नाम जो है वो इंडियन ओशन रखा गया है, क्योंकि इस ओशन में जो है इंडिया का काफी ज्यादा प्रेजेंस है। आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखने होते हैं, जैसे बे हो गया। ठीक है। देन गल्फ हो गया एंड स्ट्रेट हो गया। मैं तुम्हें इनके बीच का डिफरेंस बता देता हूँ और मीनिंग्स बता देता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने जो है हमारे इंडिया का बे ऑफ बंगाल सुना होगा, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन। ठीक है। अपने बे ऑफ बंगाल वाला रीजन सुना होगा। ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल जो है, इसको बे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 3 साइड से, ठीक है, 3 साइड से जो है लैंड होता है और एक साइड से वाटर होता है। ठीक है। इस एरिया को फिर जो है बे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका अपोजिट, ठीक है, इसका एंटेनिम बोल सकते हो आप। ठीक है। इसका अपोजिट मतलब 3 साइड से वाटर एंड लैंड ऑन वन साइड। ठीक है। एक साइड से लैंड। ठीक है। इसको जो है पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है। फिर इसको पेनिनसुला कहा जाता है। उसके बाद सेकंड चीज अगर देखोगे तो फिर यहाँ पर गल्फ की बात है। ठीक है। तो गल्फ भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। गल्फ भी जो है वो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, बट ये एक बहुत नैरो एरिया होता है। 3 साइड से वाटर रहेगा और, हाँ,
एक साइड से लैंड रहेगा, ठीक है, बट वो एरिया बहुत छोटा रहेगा। आप मैप पे गूगल वगैरह करके देख सकते हो, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ खंबत हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल से उसके एरिया बहुत छोटा होता है। बे ऑफ बंगाल को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया है वो, बट गल्फ के बारे में बात करें तो वो काफी एक छोटा एरिया होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट एक ऐसा एरिया होता है जो मतलब दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक नैरो पैसेज जो होता है उसको स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके लिए आप पार्क स्ट्रेट का एग्जांपल ले सकते हो। पार्क स्ट्रेट जो है, ठीक है, वो श्रीलंका और इंडिया का जो नीचे वाला, जैसे अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो इधर पे कहीं श्रीलंका है, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो बीच का पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इस एरिया को जो है पार्क स्ट्रेट कहा जाता है, क्योंकि इस तरफ हमारा इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल का रीजन है, ठीक है, और इस तरफ से हमारा अरेबियन सी, ठीक है। तो इन दो इतने बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा जो एरिया है, ठीक है, इसी को बोला जाता है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। और ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड भी करता है, ठीक है, तो इसको स्ट्रेट बोला जाता है। इसका अगर एंटोनिम देखोगे तुम, इसका बिल्कुल उल्टा, तो उसको बोला जाता है इस्थमस, ठीक है, उसको इस्थमस कहा जाता है, जो दो अ, बड़ी लैंड बॉन्ड लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स टू ह्यूज लैंड मासेस, ठीक है। सेम होता है आपके ये इसके जैसा ही, स्ट्रेट जैसा ही, एकदम नैरो एरिया होता है, नैरो लैंड का एरिया होता है जो बड़े दो लैंड के एरियाज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए बे ऑफ बंगाल, गल्फ और पाक स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। कुछ फेमस जो ये है बे एंड गल्फ्स है, वो मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, वो याद रखना, ठीक है। मैं उसके साथ आपको रीजन भी लिखवा देता हूँ वो कहाँ पर है। सबसे पहले आता है गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिको रीजन में है ये, ठीक है, ये है तुम्हारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। उसके बाद आता है तुम्हारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी जो है तुम्हारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट है डेविस स्ट्रेट, ठीक है, ये डेविस स्ट्रेट जो है ये तुम्हारा ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड जो कनाडा के अंडर है, उनको कनेक्ट करता है ये रीजन, ठीक है। और अगर हमारे आसपास देखा जाए तो पर्शियन गल्फ हो गया, देन गल्फ ऑफ एडन हो गया, हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, ये कुछ फेमस जो है बेज एंड गल्फ्स है हमारे आसपास, हमारी कंट्री के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको स्टेट का बताया, जो हमारा ये है पनामा कैनल हो गया, नहीं तो स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, ठीक है, नहीं तो हमारा ये जो सुइस सुइस कैनाल नहीं कैनाल है वो, ठीक है, ठीक है, हाँ, सुइस कैनाल हो गया। उसके बाद पार्क स्ट्रेट हो गया, मरमरा, मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का है, मरमरा नहीं।
नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं दिया गया वो मरमरा होगा। ठीक है। उसके बाद पार्क स्ट्रीट हो गया, ये कुछ फेमस स्ट्रीट है हमारे। ठीक है। अभी जैसे मलक्का स्ट्रीट हो गया। ठीक है। मलक्का स्ट्रीट हो गया, जैसे मैंने तुम लोगों को स्ट्रीट्स के बारे में बताया था कि वो जो है दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, सॉरी, दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट करता है? अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है ये। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा पार्क स्ट्रीट। ठीक है, पार्क स्ट्रीट के ऑलरेडी बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट जरूर करता है, बट इस तरफ जो, हाँ, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एरिया है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सुंदा स्ट्रीट। ठीक है। सुंदा स्ट्रीट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जावा सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, इंडोनेशिया में है ये। ठीक है। उसका बाद जो और कुछ इम्पोर्टेंट है वो है 10 डिग्री चैनल हो गया। 10 डिग्री चैनल जो है वो 10 डिग्री चैनल भी इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है। ये जो है हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, उनको अलग करता है। कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है ये। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये जो है 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से ज्वाइन करता है। फिर इंग्लिश चैनल आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है वो सदर्न इंग्लैंड को नदर्न फ्रांस से अलग करता है। ठीक है। और इसका एक और जो ये है मतलब फीचर है या फैक्ट बोल लो, वो ये है कि ये बिजिएस्ट, सबसे बिजी शिपिंग एरिया है वर्ल्ड का। डायरेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हमारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखें तो सबसे पहले आता है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। फोर्थ आता है साउथ अमेरिका।
फिफ्थ आता है हमारा यूरोप। सिक्स्थ आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ का हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जैसे एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अमंग ऑल द सेवन। ठीक है, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एडिशनली अगर एशियन कॉन्टिनेंट का देखो तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। तो एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो टैग किया गया है रिसेंटली, ऐसा कि एशियन कॉन्टिनेंट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग ऑल द सेवन। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट जनरेशन जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट की होती है, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एशियन कॉन्टिनेंट में ही है। सेकंड आता है हमारा अफ्रीका। ठीक है, हमारी कंट्री भी इनफैक्ट ये एशियन कॉन्टिनेंट में ही आती है। एशियन कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन भी है। ठीक है, फिर सेकंड आता है अफ्रीका, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सेकंड ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ना वो नॉर्मली आपके, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ना वो फेमस है डेजर्ट्स के लिए। अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े डेजर्ट्स देखोगे, सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है, और बाकी के भी डेजर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे डेजर्ट्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। स्विस कैनाल भी जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आता है। ठीक है, सुएज कैनाल भी जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आता है। एंड एडिशनली अगर तुम देखोगे तो ये मिनरल्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर मिनरल्स जो है वो काफी ज्यादा है, बट ज्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करके खुद का ग्रोथ वगैरह ज्यादा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, सेकेंड थर्ड आता है हमारा, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और जो बड़े बड़े सिटीज है एंड पोर्ट्स है, जैसे लॉस एंजलिस हो गया। ठीक है, लॉस एंजलिस हो गया। देन हमारा लॉस एंजलिस के बाद ये न्यूयॉर्क हो गया। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पोर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो अपने ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जैसे रॉकी माउंटेन्स हो गए, देन लेक्स हो गए, मिसिसिपी लेक हो, रिवर हो गई। ये सारे टाइप के जो ये है वो यहाँ पर ही नॉर्थ अमेरिका पे ही मिलते हैं। एडिशनली पनामा कैनल भी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड, पनामा कैनल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट ये हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये भी अपने डाइवर्स इसके लिए फेमस है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो ब्राजील का एरिया है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही आता है, जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए जो है काफी फेमस है ये ब्राजील एरिया। ठीक है, उसके बाद जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है, जैसे एंडस माउंटेन रेंज हो गया। ठीक है, ये भी यहीं पर लोकेटेड है, एंडस माउंटेन्स। और यहाँ पर एक फेमस डेजर्ट भी है जिसको एटकाना डेजर्ट बोला जाता है। ये डेजर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका पे जो है लिविंग क्रीचर्स वगैरह जो है मतलब रहते हैं, बट ठीक है, अंटार्कटिका अंटार्कटिका जो है वो एक मतलब फ्रीज्ड एरिया है। ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। वहां पर ऐसा परमानेंट पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है, ना ही वहां पर पोर्ट्स वगैरह है। ठीक है, वहां पर कोई भी पोर्ट वगैरह नहीं है ऐसा सिग्निफिकेंट, क्योंकि वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन रहता ही नहीं है, तो वहां पर ट्रेड वगैरह का जरूरत पड़ता नहीं है। यहाँ पर जो है ये अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के लिए माना जाता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ हमारा यूरोप। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है यूरोप।
ये जो है सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एडिशनली यहाँ पर ट्रेड एंड ऑल जो है वो काफी ज्यादा होता है, और इसको जो है मेजर हब बोला जाता है ग्लोबल ट्रेड का। ठीक है। यहीं पर तुम्हें इंग्लिश चैनल हो गया, देन मेडिटेरियन सी हो गया, ये टाइप जो है इधर ही पर मिलेंगे तुम्हें ये एरियाज। ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सेवन सबसे लास्ट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कंट्री होने के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। कंट्री प्लस कॉन्टिनेंट है, ये दोनों है, ये कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो रीफ है वो देखने को मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है जिसको। कोरल्स होते हैं ये बेसिकली, ग्रेट बैरियर रीफ कोरल्स होता है ये। और ऑस्ट्रेलिया में जो मेजोरिटी ऑफ द जो पोर्ट्स है वो मिनरल्स, इधर मिनरल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। देन हम लोग कुछ कंट्रीज की बात करेंगे। आप लोगों ने G20 का नाम सुना होगा, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है। ये ग्रुप ऑफ 20 मतलब ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ 20 इमर्जिंग कंट्रीज है। ठीक है। बट ये ग्रुप ऑफ 20 जो है वो सेंट्रल बैंक्स का ग्रुप है, 20 सेंट्रल बैंक्स का ग्रुप है ये। ठीक है। और इसमें जो कंट्रीज आती हैं हम उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं, ऐसे बाकी के भी ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए G20 कंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अर्जेंटीना। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका करेंसी जो है वो है अर्जेंटीन पेसो। ठीक है। और इसका अगर कैपिटल देखें हम लोग, ठीक है, तो इसका कैपिटल है बोनस एयरेस। ये इसका कैपिटल है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबेरा है। एंड यहाँ की करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ब्राजील। ठीक है। ब्राजील को इंडिया से बहुत वेज में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ब्राजील का जो फिजियोग्राफी है वो इंडिया से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ब्राजील का कैपिटल अगर हम देखें तो ब्राजीलिया है। ठीक है। एंड यहाँ की करेंसी जो है वो है ब्राजीलियन रियाल। पहले इसका कैपिटल साओ पोलो था, बट अभी इसका कैपिटल जो है वो चेंज कर दिया गया है ब्राजील का। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ कनाडा, जिसमें अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए और नया उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने इलेक्ट करके लिया है। कैपिटल जो है इसका ओटावा है। एंड करेंसी जो है इसका कैनेडियन डॉलर है। देन आता है हमारा नेबरिंग एक कंट्री जिसका नाम है चाइना। चाइना का कैपिटल अगर हम लोग देखें तो वो है बीजिंग। एंड इनका करेंसी है युआन। सिक्स अगर हम देखें तो इसमें आता है फ्रांस, जिससे हम लोगों ने रिसेंटली रफाल परचेज किए थे, राफेल्स। और दसॉल्ट करके कंपनी है जिन्होंने हमें सप्लाई की है, ये फ्रांस फ्रांस का ही कंपनी है, एक फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट, डसॉल्ट एविएशन। उन्होंने ही हमें ये रफाल जो है वो दिए हैं। एडिशनली अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डील भी हुआ है फ्रांस के साथ हमारा,
वो डील इस रिलेटेड है कि वो हमें रफाल एम देने वाले हैं, मतलब जो नेवी के लिए स्पेशलाइज्ड रफाल से होते हैं वो हमें वो अवेल करके देने वाले हैं। तो अगर फ्रांस का कैपिटल देखे तो पेरिस है, जिसमें रिसेंटली ओलंपिक्स भी हुए थे, ठीक है। और यहाँ का करेंसी जो है वो यूरो है, यहाँ का करेंसी यूरो है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आता है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। ये सारे यूरोपियन नेशंस है, यूरोपियन यूनियन के अंडर आने वाले, इसलिए इन सबकी जो करेंसी है वो यूरो ही रहेगी। देन आता है इटली।